आवाज ना रख कौन. Okay, how to read normal ECG? We will continue previous discussion. This is normal ECG. P wave, Q wave, R wave, S wave, and T wave. There are present 5 waves and 2 segments, PR segment and ST segment, and 2 intervals, PR interval and ST interval. When there is present one wave plus one segment, this is called interval. There are 2 intervals and 2 segments, and this is whole QRS complex. Q wave, R wave, S wave. This is called QRS complex. Okay. Duration of P wave is about 0.1 second. PR segment is also 0.1 second. QRS complex is also 0.1 second, and left 0.3 or 0.4 second is for ST interval. Okay. How to read normal ECG? Normal ECG. When we put leads on our body, these leads show 3-dimensional shape. For example, there are some leads that show lateral side of heart. Lateral side of heart. Some leads show only anterior and septal area. Some leads show right side of heart, and some leads show inferior side of heart. Inferior side of heart. For example, here is present heart, and for example, if we draw one triangle, and in this triangle heart is present. Some leads show lateral side of heart. Lateral means left side of heart. Some leads show the electrical activity of anterior and septal side of heart. Some leads show electrical activity of right side of heart. Some leads show electrical activity of inferior side of heart. Okay, which leads show septal and anterior side of heart? Here are present lead number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Lead number V2, V3, V4, and V1. These 4 leads show electrical activity of anterior side and septal side of heart. Exactly these are present on the anterior surface of heart. V1 is present here, V2 is here, V3 is here, and V4. These are directly present on the anterior surface of heart, and here is present also interventricular septum. These show electrical activity of septal and anterior side of heart. Next, inferior leads. Here downside is present lead AVF. On the right side of heart is present AVR, and here is present AVL. Yes? And one is attached with right arm, and left foot. And next, there are 3 bipolar leads. Lead number 1 is present on the superior side of heart. Lead number 2 is present on this side of heart, and lead number 3 here. Lead number 1, 2, 3. Positive terminal of lead number 1 is attached with right arm, and negative terminal of this lead is attached with left arm. Here is positive, and here is negative for lead number 1. Sorry, negative. Here is positive and negative. For lead number 3, positive end is attached with AVR, or we can say right arm, and negative with AVF. And for lead number 2, positive terminal is attached with left foot, and negative terminal is attached with left arm region. And these 3 are bipolar leads, and these 3 are unipolar limb leads, and 6 leads are pericardial or chest leads. V1, V2, V3, V4 record the electrical activity of anterior and septal surface of heart. Next, lead number V5, V6, and lead number 1. These show electrical activity of lateral side of heart. When we diagnose different types of myocardial infarction, if for example there is ST segment elevation or depression,
present in lead 1, 2, 3, 4, it means myocardial infarction is present on the anterior and septal surface of heart. I will explain it. V5, V6 and lead number 1, these show lateral side of heart because V5 is present here, V6 is present here. Inferior leads, lead number 3, lead number 2 and lead number AVF, these are present on the inferior side of heart. So these are called inferior leads 2, 3 and AVF. Next, right leads, 2 leads are remaining. Lead number V1 is also present here. And next lead कौन सी होती है इसमें 2 नंबर जो आती है वो भी राइट साइड की एक्टिविटी शो करती है. राइट साइड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि राइट साइड पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांस ही बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होते हैं. फॉर एग्जांपल V1 और AVR राइट आर्म ये होती है जो हार्ट के ऊपर लीड्स हैं. हार्ट की को 3 डायमेंशनल में कौन सी लीड किस एरिया को शो करती है. वो क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर दूं बात. ओके, चेस्ट लीड 6 लीड लगानी है. उनमें से V1, V2, V3 और V4 ये तो डायरेक्ट हार्ट की एंटीरियर साइड और सेप्टल साइड पे हैं. तो ये हार्ट के अंदर जो भी एंटीरियर और सेप्टल एरिया पे इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होगी वो शो करेंगी. लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और AVF ये हार्ट की इंफीरियर साइड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करती हैं. अगर पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है और सेप्टल यानी एंटीरियर और सेप्टल एरिया का होता है तो इन लीडों के अंदर क्यू वेव प्रेजेंट होगी और ST सेगमेंट या एलिवेट होगा या डिप्रेस होगा. अगर हम ECG को पैटर्न को चेक करते हैं और इन लीड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब है पेशेंट को इस एरिया में डिफेक्ट है. यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस है या थ्रोम्बस उसके अंदर बना हुआ है, उसके रिजल्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रही है. अगर इंफीरियर साइड की मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो इसका एक प्रोसेस हो सकता है कि जो बैक साइड से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आ रही है राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है. तो वो लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और AVF के अंदर डिफेक्ट आएगा. अगर राइट साइड की शो करनी है तो V1 और AVR जो है वो राइट साइड पे शो कर रहे होते हैं. और इसके बाद लेटरल लीड्स है V5, V6 और लीड नंबर 1 ये लेटरल साइड पे शो करते हैं. और इनको पढ़ने या पढ़ाने का क्या मकसद है. फॉर एग्जांपल अभी जो मैं नॉर्मल समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो V5 और V6 के अंदर R वेव बहुत बड़ी हो जाएगी. तो क्योंकि ये लेटरल साइड को शो कर रही है, अगर इस एरिया में ज्यादा वोल्टेज वाला पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है यानी डीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस इंक्रीज हो गई है तो V5 और V6 की R वेव बहुत बड़ी हो जाएगी. तो उसका मतलब है पेशेंट की लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है. अगर V1 और AVR के अंदर R वेव बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है. ठीक है. और इसी तरह फिर आगे दूसरी बता जाती है इसमें कोई ओके. जब भी ECG पैटर्न को स्टार्ट करना है तो उसके कुछ पॉइंट हैं कि नॉर्मल कैसे स्टडी करना है.